Hi, welcome to the Dental Boys YouTube channel. I am Dr. Karan Suryanarayan, and here with me is my colleague Dr. Kunal Bandare. I am a dental implantologist. I am practicing for the past 7 years, and Dr. Kunal is a dental implant restorative general dentist. He is also practicing for the past 7 years. So today's case is from Dr. Kunal's office. So I leave the stage to him. यस सो हम लोग पहले तो एक्सरे ऊपर डाल देते हैं. सो 2019 में देयर वाज अ पेशेंट हु केम टू माय ऑफिस एंड शी वाज कंप्लेनिंग कि मैंने 2 इम्प्लांट्स करवाए हैं राइट साइड में पीछे की तरफ एंड बहुत पेन हो रहा है मुझे, बहुत इरिटेशन है, हरदम वो दांत मूव भी होते हैं. तो शी वाज वेरी प्रॉपर्ली टेलिंग मी कि कुणाल प्लीज गिव मी अ गुड सोल्यूशन टू दिस. एंड मैं इरिटेट हो She was known to you, right? हाँ, वाया वाया Okay. तो शी वाज लाइक वो पहले ही बता रही थी मुझे कि हाँ प्लीज मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, ऑल दोस थिंग्स शी वाज सेइंग. तो मैंने सबसे पहले एक्सरे लिया एंड ये फर्स्ट एक्सरे मैंने उनका लिया था. उसके बाद मैंने ओवरली भी इसको चेक किया था केस को. तो बकलिंगुअली 2 जो थे इम्प्लांट जो उसके ऊपर जो कैप्स थे वो मूव हो रहे थे. Okay. तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि या आई गॉट दिस डन फ्रॉम कॉर्पोरेट चेन, वहाँ से मैंने करवाया इस इम्प्लांट को. मुझे बहुत इरिटेशन रहा था जब भी कैप लगने के दिन भी मैं उनके पास बोल रही थी कि नहीं अभी मुझे दर्द हो रहा है, अभी मुझे दर्द हो रहा है. बट तो कैप लगाने के दिन पे भी उनको दर्द हो रहा है? कैप लगाने वाले दिन पे भी उनको पेन था. उन्होंने जाके वाके जो So I would just like to ask you कि when did the patient get this treatment done and when did she come to you? सो पेशेंट जब मुझे मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा कि मैंने 2 साल पहले ये इम्प्लांट्स डलवाए हैं. 2 साल? यस, 2 साल पहले डलवाए हैं मैंने. एंड उन्होंने कहा जब मैं कैप भी लगा रही थी, उन्होंने मुझे 3 महीने का टाइम बताया कि 3 महीने बाद आपके कैप्स लग जाएंगे. फिर उसके बाद तभी भी मुझे इम्प्लांट्स में वहाँ पे उस एरिया में बहुत डिस्कम्फर्ट था, मुझे पेन था, बहुत इश्यूज So while putting the cap only she was having pain? यस यस. तो जब कैप लगा रहे थे उस टाइम पे भी उनको पेन था. तो शी सर उन्होंने कहा कि हाँ डोंट वरी ये ठीक हो जाएगा. तो दे डिड सम स्केलिंग एंड क्लीन करके उनको वापस से भेज दिया एंड जस्ट टोल्ड हर कि हाँ ठीक है चलेगा, दिस इज ऑल फाइन, ठीक हो जाएगा. कैप भी लगा दिया उनके बाद. फिर उसके बाद एवरी 1 or 2 months यूज्ड टू गो टू दैट क्लिनिक एंड वहाँ पे जाके वो बोलती थी कि हाँ मुझे अभी भी इरिटेशन है, डिस्कम्फर्ट है, प्रॉब्लम है, स्वेलिंग आता है, ये होता है, बहुत कुछ उन्होंने बोला. खाना चबाने हो रहा था? यस, खाना चबाते समय भी इट वाज मूविंग अ लिटिल. तो ये सब चीजें वो So during while eating food was she having pain? यस. Okay. So she was multiple. She was going again and again. I think ये corporate chain बोला तो उनका एक फाइल रहेगा. Yes. So you would have seen the file. Yes, I saw the file properly. मैंने dates भी check किए, कौन सा इम्प्लांट डाला है, मैंने सब कुछ चेक किया and everything was like clear in front of me. एंड तो फिर उन्होंने मुझे क्लियरली ये कहा कि गिव मी अ सोल्यूशन फॉर दिस थिंग. तो मैंने उनको और पूछा कि ठीक है 2 साल क्या हुआ फिर, व्हाट वाज द Why were you waiting for 2 years? व्हाई वर यू वेटिंग फॉर 2 years. तो शी टोल्ड मी कि हाँ मैं हर महीने उनके पास जाती थी, कुछ टाइम बाद जाती थी. तो ऑलवेज दे यूज्ड टू क्लीन दैट एरिया, गिव मी सम जेल टू अप्लाई एंड फिर उसके बाद वो हरदम मुझे छोड़ दिया करते थे. तो दिस वाज अ स्टोरी फॉर लास्ट 2 years शी वाज टेलिंग दैट. Long span. Okay. तो शी केम टू मी वेरी मच इरिटेटेड कि अभी मैं क्या करूँ, मुझे आई नीड अ गुड सोल्यूशन टू दिस. So okay. So when the patient came to you, Yes. you took the history and then now you took an X-ray. Yes. So after taking the X-ray, then what did you see? So I could see there implants placed हुए हैं यहाँ पे. फिर उसके बाद कुछ बोन लॉस है आसपास, थोड़ा सा इशू सब जगह पे मुझे दिख रहा था. बक्कलिंगुअली बहुत अच्छे से मूव भी हो रहा था, वो मुझे मूव भी नहीं करने दे रहे थे क्योंकि शी वाज हैविंग अ लॉट ऑफ पेन इन दैट एरिया. सो अगेन द स्ट्रेट अवे वो सोल्यूशन आई कुड टेल हर कि हम लोग को ये इम्प्लांट्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये इम्प्लांट्स फेल हो चुके हैं. तो शी वाज लाइक कि अरे बाप रे आई स्पेंड सो मच ऑफ मनी एंड ऐसा वापस से कैसे, मतलब ऑल दीस थिंग्स शी स्टार्टेड टेलिंग मी. But I managed to convince her properly कि हाँ if you really trust me तो one thing I would suggest कि इसको निकाल के हम लोग वहाँ पे से यहाँ पर implants डालेंगे. Don't worry, everything would be done properly. अच्छे से मैंने उनकी काउंसलिंग की, सब अच्छे से समझाया उनको and I introduced her to Dr. Karan. So Dr. Karan, please आगे बताइए what happened in this case. So when I came for the first consultation, the first thing that I noticed was she had recession. There was gross mobility. There was slight bleeding. And the patient was in a lot of pain. Again, she told me, like Dr. Kunal, that she has been going repeatedly
back to that place for some sort of resolution for her problem. They're only cleaning it and sending, cleaning and sending, cleaning and sending. So, ठीक है. Then we took the X-rays, and I felt something was not right. It looked okay on the X-ray, but it something clinically was not right. So then I decided to first thing to do was to remove the caps so that she has relief from pain. So luckily we have universal drivers because we didn't know what exact system it is, but we removed the cap. And while removing the cap, she was having tremendous pain. So then I had to anesthetize her. So whenever we do an implant, and if the implant is successfully integrated, whatever force you apply, rotational force, biting force, you will never have any sort of pain, sensitivity. You'll never feel ठंडा गरम देने पे, Yes. you will never feel sensitivity, biting पे pain, ये सारी चीजें होती ही नहीं है. Implants once integrated are very strong. So moment when you rotate and the patient starts feeling pain, there you know your implants are failing. You know, either they are never integrated in the first place, or they are having what is known as a partial integration, which we see in this case, जहाँ पे some surface of the implant attached with the bone, the remaining surface has not integrated for whatever reason. It doesn't matter. It happens. 1% to 2% cases में होता है ऐसे कि implants don't integrate. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप वो निकाल के आप वापस नया दूसरा इम्प्लांट डाल दो और वो 100% फिर इंटीग्रेट होता है. ये सबके साथ होता है. सो इन दिस केस So that was the option not given to her at all at that previous clinic of so he was given dietary, diabetic control, anesthetic gels, cleaning of the implant. I don't know what they are cleaning, and all those things were done. But the actual treatment which was required, that is the explantation, and then replace it with just new implants. It doesn't hardly takes 5 minutes to do this job. Unfortunately, when she came to us, it has been 2 years, so there was a lot of bone loss around those implants. So when I removed the cap, then I explanted the implants. I'll put the X-rays, photos for everything on top. Yes. There was a lot of bone loss around the implant because it has not integrated, and it is, there is a lot of infectious tissue around. So then what we did is we cleaned everything. Luckily, the patient agreed to our treatment plan, which 50% times doesn't happen. Yes. But this patient agreed. So we removed the implant. वो तो 5 मिनट में निकल गया. Then we cleaned the bone nicely, thoroughly, disinfected that area. We then put I used Strawman tissue level rock solid implants and put some bone graft nicely around that area. And we got good stability. I was pretty confident that the implants will work now. And we left it to heal for 2 months. And after 2 months, when we came, so this is the X-ray which we are putting up. ये 2 महीने बाद का healing के बाद का हम लोग को ये so we मिला have था this X-ray. So many people have this reservation towards tissue level implants. I feel that these are great implants for the backside teeth because they have a component, smooth surface component which engage, which is tissue level बोला तो. See, there are two types of implants. One is a bone level implant and one is a tissue level implant. Bone level मतलब जो हड्डी के अंदर जाता है, that's why it's called bone level. Tissue level मतलब some part of the implant is outside the bone and उस पे आपका जो gums होता है वो attach होता है. Yes. So we'll put everything up. What is the tissue level? What is the bone level? So the bone level, tissue level implants are my favorite implants. 95% of the times I use these implants. Strawman tissue level, rock solid implants. So the advantages of using these implants is that because the surface is machine polished, there is no plaque attachment. Food attachment, food lodgement नहीं होता है वहाँ पे. उसके वजह से क्या होता है कि इट्स वेरी इजीली मेंटेनेबल बिकॉज इट्स अ स्मूथ सरफेस, कुछ भी चिपकता नहीं है उसको. प्लस वो टिश्यू के अंदर रहता है तो गम उस पर अच्छे से अटैच होता है. पेशेंट अवॉइड्स सेकेंड सर्जरी जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में वी हैव टू आफ्टर पुटिंग द इम्प्लांट विद इन द बोन आफ्टर 3 months वी हैव टू कट एंड कनेक्ट द हीलिंग अबटमेंट and all that. That is completely avoided. Directly implants are seen in the mouth. You will see it in the photographs. And we can just take a measurement directly. So we are not disturbing any gums which are already healed around the implant. So there are many advantages.
one of the major advantages that implants में जो एक long term issue देखा गया है known as peri-implantitis, जहाँ पे कभी कभी सीमेंट रेजिड्यू रहने के वजह से या कैप लगाने के बाद ओवर आफ्टर अ फ्यू इयर्स फूड अटकने की वजह से या हड्डी का लेवल कम होने की वजह से वो रफ सरफेस ऑफ जो इम्प्लांट जो रहता है वहाँ पे खाना अटक के उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होके द बोन अराउंड द इम्प्लांट्स गेट अफेक्टेड एंड यू स्टार्ट हैविंग बोन लॉस दैट इज नोन एज पेरी इम्प्लांटाइटिस. बट सिंस इन टिश्यू लेवल इम्प्लांट्स द मशीन कॉलर इज अबाउ द बोन, इट्स बोन से ऊपर है, तो जो कैप उसके ऊपर लगता है, so there is a good 2 millimeter distance between the bone level and the tissue surface. Yes. So because of that, anything if any issues occur, that is only contained to the gums. And that is gum का जब issue होता है, it is very easily solvable with the laser, we easily clean it. And bone में होता है तो it's a little difficult to manage, but हो जाता है, आजकल सब manage होता है. But these are very good for back teeth, and I prefer these implants. So we place these implants. 2 months के अंदर implants integrate हो गए. We did a load test. Implant was successfully completely integrated. You can see on the X-ray it's great. Tissue around the implant was superb. We took a measurement. We delivered her monolith zirconia caps. Yes. And now it has we left the patient. After that, she came for regular follow-ups. It was healing very well. Yes. We have a 2-year follow-up picture, which I will be again putting up. And if you will see the gum health around the implant, it is very good. Very good. The tissue level के ऊपर जगह जा चुका है वो. So we know that it has healed very well. And ultimately, the main thing is the main purpose of doing implants in the back region for anybody is the patient was chewing very comfortably. Yes. There was no food getting stuck. There was no pain, nothing. Like जो normal implantology में जैसे होता है कि कुछ भी नहीं होता, ये तो एकदम normally सब heal हो जाता है. And the same thing you can see in this case. Patient was very happy. Now it has been 4 years. We are in still, though the patient cannot visit us because maybe she has shifted somewhere shifted far away. But she is very happy. We are in constant touch with her, and we can say that we have successfully and happily resolved this case in Dr. Kunal's clinic. Yes. And doctor, if you want to say anything. Yes. So clinical side तो डॉक्टर करण ने समझा दिया. नॉन क्लिनिकल साइड में थोड़ा सा बता देता हूँ. आफ्टर शी वाज डन विथ हर इम्प्लांट्स एंड जो कुछ भी था, तो फर्स्ट थिंग मैं आपको इस केस के बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत बार पेशेंट से लगता है कि पेन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इम्प्लांट्स प्लेस कर रहे हो, होल कर रहे हो, ड्रिल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर 3 days शी जस्ट टोल्ड मी कि ऑल माय पेन हैज गॉन. एंड शी वाज जोकिंगली टेलिंग मी कि अभी मैं नहीं आऊंगी तो भी चलेगा ना, मेरा पेन तो चला गया. तो ऑल दोस काइंड ऑफ फनी मोमेंट्स वी आर शेयरिंग, और जो कुछ भी मेरी उनसे बातें हो रही थी. 3 महीने बाद भी जब वो आई तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ मेरा सब कुछ कुणाल तुमने सॉल्व कर दिया. शी इज वेरी हैप्पी. अगेन वन नेक्स्ट थिंग विच आई टोल्ड हर कि इम्प्लांट आज हमने डाल दिया है, दिस इज नॉट द एंड, अभी खत्म नहीं हुआ है. डोंट टॉक लाइक दैट कि हाँ मैं जा रही हूँ, आई एम सो फ्री एंड ऑल दीज थिंग्स. आई टोल्ड हर टू कम आफ्टर 3 months टू शो मी दिस केस अगेन. 3 महीने बाद वो वापस आए. वी सॉ दैट सब कुछ एक्सरे वापस से लिए, जो कुछ भी था एवरीथिंग वाज प्रॉपर्ली, कुछ भी उसमें फूड लॉजमेंट, खाना नहीं अटक रहा था, क्राउन वाज परफेक्ट, बाइट वाज परफेक्ट, सब कुछ सही था. एंड शी वेंट अवे. अगेन आई कॉल्ड हर आफ्टर 3 months अगेन. 3 months बाद वापस से आए. अगेन आई चेक्ड इट. So follow up, like Dr. Kunal is saying, follow up is mandatory. Whether it is a successful case, whether it's a retreatment case, or whether it is a normal case, every problem can be solved very early if you come for a follow up. Yes. This is for all the patients who are watching. And to doctors, I want to tell one thing, that see, there are certain cases where implants can fail 1 to 2%, like I keep constantly emphasizing. Whenever you encounter a failure, don't run away from it. You face it head on. Yes. Correct it, and you will have such results very easily. Even we face failure in our clinic, but we are able to negotiate it and redo the implant properly. And the patient, it's खाली थोड़ा time और लग जाता है. आपको chair set तो it takes only 15 minutes to do the job. Remaining is only the waiting period जो थोड़ा बढ़ जाता है. That is okay, but don't do this कि the patient keeps coming back to you again and again and you're cleaning him away. Give a definitive treatment. Don't
just ward the around the patient. bush, Yeah, yeah. don't beat around the bush. Yes. Don't try to postpone it. Maybe you're given some warranty to the patient. कि 5 साल का warranty है. Don't wait for 5 years to do this again. You can do it properly, and such results are very easily achievable. Yes. You don't need some special skills for this. Hmm. It is a very normal case, and it can be solved. That's what all I want to tell. To summarize, that is why we put this case up. कि एवरीवन शुड नो कि ऐसा होता है, एंड उसको बहुत इजीली करेक्ट कर सकते हैं इवन फॉर पेशेंट्स. कि एक बार आपका इम्प्लांट कुछ फेल हो जाता है, इसका मतलब नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है. यू कैन गेट इट डन अगेन एंड अगेन. And with each every passing, mostly I have seen कि एक बार फेल हुआ, वो दूसरी बार लगा तो 100% सक्सेस रेट है. मतलब मेरे पास तो 100% है, और आई थिंक दुनिया भर में 100% है. तो वो आप उसके वजह से नेगेटिव मत हो जाओ. So that's all. To summarize, I think Yes. this is enough. And again, I would like to say कि if you have any cases like that, you can always share with us on our Instagram or email ID. Yes. And do like, share, subscribe to our channel. Yes. And we'll be back with another case. Yes, just he mentioned Instagram. This case has been put up on Instagram, Yeah. Dr. Karan's. My page, you can see it. Yes, on If you Instagram. want to see. Yeah. Okay. Thank you. Yes, thank you very much. Bye. See you soon. Bye.